चंपू आदर्श विद्यालय प्रांगण में जंगल परिवेश जलवायु परिवर्तन पक्षर केन्दुझर वनखंड अधिकारी डीडी हनुमंत निर्देश अनुसार 76तम वनमहोत्सव पालन होइछि। वनमहोत्सवर यह वृक्षरोपण कार्यक्रम में आदर्श विद्यालय इको क्लब पक्षर एक आलोचना चक्र अनुष्ठित हो जाइछि, जार उद्देश्य रही वृक्ष ही जीवन माँ पाई गछटिए। यह वनमहोत्सव पालन उत्सव में मुख्य अतिथि भाव में चंपुआ वनांचल अधिकारी एसीएफ अक्षय छत्रिया, सम्मानित अतिथि भाव में चंपुआ वनपाल ज्योतिरूपा पाणी, विद्यालय अध्यक्षा प्रज्ञास्मिता पति, शिक्षयित्री सस्मिता लेंका, विष्णुप्रिया माझी, श्वेता आचार्य, शिक्षक धनेश्वर नायक प्रमुख उपस्थित थिले। विद्यालय शिक्षयित्री सूर्यकांति जेना आलोचना चक्र परिचालना करथिला बेले छात्र छात्री माने वृक्षरोपण उपकारिता उपरे निज निजर वक्तव्य रखिछंती। एपरिकी समस्त अतिथिगण वृक्ष विद्यालय परिसर रे रोपण एक सुंदर परिवेश सृष्टि करिया पाए वार्ता प्रदान करछंती। एपरिकी विद्यालय छात्र छात्री ठारू आरंभ करी समस्त अतिथि शिक्षक शिक्षयित्री माने विभिन्न प्रकार चारा अँला, आंब, पणस, निंब, मेहगानी आदि वृक्षरोपण करिछंती। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନପାଳ ଜ୍ୟୋତିରୂପା ପାଣି, ବନରକ୍ଷୀ ନିରୁପମା ମହାକୁଡ, ତପସ୍ୱିନୀ ନାୟକ, ସେକ୍ସନର ବନ କର୍ମଚାରୀ, ଇକୋ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଓ ସ୍କାଉଟ ଗାଇଡ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆରୁ ମମତା ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, जनता जिंदाबाद। On behalf of Odisha Adarsh Vidyalaya Champua, I feel honored to propose the vote of thanks on this wonderful occasion of Vana Mahotsav, a celebration of greenery, life and our shared responsibility to protect nature. First and foremost, I extend my heartfelt thanks to our chief guest, ACF Akshay Kshatriya sir and Jyotirmay Pani madam, for gracing the event with their presence and for sharing such inspiring words on importance of trees and environmental conservation. A sincere thanks to all our teachers. The plantation of tree is very important and essential task. The people should plant many trees as much as possible. By planting trees, it makes the environment greenery. The roots of the trees anchor the soil tightly to prevent soil erosion. So plantation of trees and number of trees are very essential for our survival. We should plant at least 2 or more trees in a year. Every year we celebrate Vana Mahotsav on account of importance of trees on first week of July. So save trees, save earth. Thank you everyone. And all my dear children, today we are celebrating Vana Mahotsav 25-26. So on this day, I would like to introduce our esteemed guest on the dais, Forest Ranger Akshay Kshatriya sir, and our Forester Madam Jyotirupa Pani madam. We welcome you wholeheartedly and all other staff who have come here and joining us for this Vana Mahotsav today. So आमे actually Vana Mahotsav काहेकि पालन करूचे कि पिला मते के कहि परिबो काहेकि आमे Vana Mahotsav पालन करूचे काहेकि आमे पालन करूचे हम मॉनसून को सेलिब्रेट